Good morning, class 8. First of all, I would like to talk about the online class which was held for class 8B today in the morning. Only 6 students were able to connect. Maybe there is a reason that you did not receive a message or something like that. But beta, I would like to inform you that daily you will be having at least 2 online classes. So whatever is your school message phone number, kindly check that message box daily, because from tomorrow onwards from 10 a.m. to 12 a.m. you will be having at least 2 classes. Today only 6 students of class 8B were connected, and I hope after hearing this message, many of you will connect tomorrow. Now, today I am starting chapter 3, Fire Buckets from Mulberry book. Now, before starting the chapter, I would like to tell you what is a fire bucket. Fire means aag, bucket means balti. In earlier times when there were no fire extinguishers, आपने स्कूल में अपनी फायर की मॉक ड्रिल में देखा है ना, कैसे सिक्योरिटी वाले अंकल आकर और हमको बताते हैं कौन सी आग लगती है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है. तो एक्सटिंग्विशर्स तो बेटा अभी हैं. पहले के ज़माने में बहुत सी पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, ऐसी जगहों पे बड़ी बड़ी बकेट्स में सैंड भर के रखी जाती थी इमरजेंसी के लिए, कि अगर कभी आग लग जाती है तो उन बकेट्स की सैंड को आग बुझाने के काम में लिया जाता था. तो इस चैप्टर का नाम है फायर बकेट्स. नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग और व्हाई द चैप्टर हैज बीन titled as fire buckets. But before going to the chapter, there is one activity given. On column A, particular science department name is given, and in column B, their study that to which that department is related is given. So you have to match the column A with column B. Suppose paleontology is there in column A. So what is it? Is it the study of behavior of bees or the scientific study of animals? You will consult your dictionaries and find out the correct answer. Tomorrow we will be discussing the correct answer. Now I am going to start about the story, which is about the visit of an anthropologist. Now, because the word anthropologist is coming in the chapter, I'll let you know the answer of anthropology. Anthropology is the study of the human race, especially of its origins, development, custom and belief. तो एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जो ये देखती है कि ह्यूमंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो ये जो स्टोरी है, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इस स्टडी को करते हैं उन लोगों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, उसकी है, जो कि एक गांव कह लो या छोटा सा टाउन कह लो जैसा हमारा कांकरोली है, उसकी विजिट पर जा रहा है. एंड द एक्साइटमेंट इट जनरेट्स इन इट्स अदरवाइज डल लाइफ. तो उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट की वजह से उस टाउन में एक्शन आ जाता है. अदरवाइज टाउन की जो लाइफ है वो बहुत ही मोनोटोनस है, बोरिंग है. द यंग कैप्टन हु केम इन फॉर स्टॉक मेडिसिन्स ब्रॉट द न्यूज. He got 2 pounds of butter and a box of chocolates, one of the several goodies they bartered, underlined the word bartered, stock medicines for. They had a lot of faith in stock medicines though. तो द यंग कैप्टन मीन्स एक कैप्टन था जो कि गांव में टाउन में आया था. स्टॉक मेडिसिन मीन्स एक्स्ट्रा मेडिसिन जो हॉस्पिटल वगैरह में होती हैं उसके लिए, और वो ये खबर लेकर आया. व्हाट इज द न्यूज वी डोंट नो, but that young captain has brought with him 2 pounds of butter. Now pounds is a unit of measurement of weight. So that captain has brought with him butter and a box of chocolates, one of the several goodies. Goodies means whatever thing which is required by us in our daily life. They bartered means exchange. Who exchanged? The people of the town in place of stock medicines. You know that the government is giving free medicines to poor people.
So and now the poor people has become very smart. What they do, they don't use the medicine but they stock it, इकट्ठा करते हैं और फिर बाहर से कोई आता है तो उसके एक्सचेंज में वो दूसरा सामान ले लेते हैं. They had a lot of faith in stock medicines. Who is they here? The town people. और इसीलिए town people have lot of faith in stock medicines. Why? Because they can exchange those medicines for other goods like butter, chocolates, any other thing. Edward Hanlon was on his way to Debru. He had told the compounder. Who had told? The captain. When he came to the town, he told that Edward Hanlon, who is an anthropologist, will be visiting their town, Debru. Before he had picked up his supplies from the shade shop, the only in the little village, masquerading, underline the word masquerading, as a town, everybody had heard the news. And when he has told this news to compounder and the captain went to collect his supplies from the sage shop. Sage shop is the only grocery, what you call kirana ki shop in the little village, masquerading as a town. Masquerading means acting or preparing itself to become a town. Everybody had heard the news. तो उसने कंपाउंडर को ये न्यूज़ बताई हॉस्पिटल में जब वो स्टॉक मेडिसिन लेने गया और जब वो सेठ की दुकान पर पहुंचा तब तक ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल चुकी थी कि एडवर्ड हैनलिन आ रहा है. न्यूज़ डिड नॉट हैव मच डिस्टेंस टू ट्रेवल. क्यों? क्योंकि वो एक टाउन जो था वो बहुत छोटा सा था, ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए एक से दूसरे से तीसरे तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. 300 meters behind the hospital were the houses of the engineer and the 2 doctors. But we come to know that there is a big hospital in the town, and behind the hospital, not far away, only 300 meters away, there were the houses for the engineers and the 2 doctors that have been appointed in the hospital. And behind them in a row stood the offices and the clerical quarters and the only shop that the Seth ran. और उन घरों के पीछे क्लर्क्स जो बाबू लोग ऑफिस में काम करते हैं, जैसे हमारे जोशी जी, उनके घर थे और कुछ ऑफिसेस थे और उन ऑफिसेस के पीछे थी सेठ की दुकान. So famous was he that not just others, he himself had forgotten his own name. Now Seth was so famous by the name Seth that he has already forgotten his real name. अब उन्हें हर कोई सेठ ही बोलता था, उनका असली नाम क्या था ये शायद सेठ खुद भूल गए थे. In front of the hospital on a little hillock, underline the word hillock, overlooking the Lohit river stood the political officer's bungalow and a little beyond that was the डाक बंगलो. और हॉस्पिटल के आगे की तरफ छोटी सी पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर अगर आप खड़े होते हो तो लोहित रिवर को देख सकते हो, वहाँ पे था उस टाउन के सबसे बड़े ऑफिसर, पॉलिटिकल ऑफिसर का बंगलो और उस बंगलो से थोड़ी सी दूरी पर था डाक बंगलो. डाक बंगलो इज अ प्लेस where government officials rest and stay during their visit to a city or a town. जैसे हम लोग होटल्स में जाके रुकते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रुकने के लिए क्या बना रखे हैं? डाक बंगलो. सो इनफ फॉर टुडे, विल टॉक टुमारो. And please check your mobiles for the online classes.